Good morning, students. Welcome to the VBPS online class. Students, as you all know that your post-periodic exam will be held in the first week of January. Okay. So students, so clear your all fees. Okay. Before exam. Okay. So students, let us start our today's topic. Your syllabus of computer is chapter 6 and chapter 7. Okay, is coming for post periodic exam. Okay, so you all are well prepared. Okay, if you have about this chapter, in this chapter, if you have any doubt, so ask me. Okay, that's why today I will going to start the revision of these chapters. Okay, so those students who are not attend the class of this chapter 6th and 7th, listen very carefully. Okay, I today I will start the revision of this chapter 6. Name is MS logo creating procedure. Okay, in this chapter students, I will discuss some topics of logo procedure. Okay, so let us start our today's work, the revision of chapter 6. Name is logo procedure, MSW logo procedure. Okay, yes students, this is your revision class, MSW creating procedure. Okay, your syllabus is for post periodic exam is chapter 6 and chapter 7. Okay, so well prepare this chapter, these both chapters. So now today I will going to start the revision of your chapter 6. Okay, so students listen very carefully. So this chapter we all are discuss some topics that is what is a procedure, parts of a logo procedure, rules for naming a procedure, editing a procedure, loading a procedure and logo procedure, creating a procedure, executing and running a procedure, and last one is saving a procedure. Okay, so students, in the previous class you have learned about some basic commands in MS logo. Okay, so now you have also learned it to draw some basic shapes. In this chapter you will learn about some logo procedure. So students, first of all, that what is the procedure? इतने प्रोसीजर वर्ड्स आ रहे हैं तो प्रोसीजर होता क्या है? व्हाट इज अ प्रोसीजर? सो बच्चों, प्रोसीजर इज ए डिफाइंड मेथड ऑफ डूइंग अ टास्क. ओके, इट इन्वॉल्व्स क्लियरली डिफाइन द various steps that help you to complete a task. For example, the procedure to make a call on a cell phone. ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों आपको ये समझा रही हूँ कि जैसे हम किसी को कॉल करते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन डू, स्विच ऑन द सेल फोन. यस, डायल द टेलीफोन नंबर यूजिंग द कीपैड. ओके, press the call button and wait for the other person to answer the call. So students, this is a procedure to call someone. किसी को फ़ोन करने के लिए जो हमें ये प्रोसीजर्स, इन सब को जो फॉलो स्टेप्स को फॉलो करते हैं हम, दैट इज़ द कॉल इज प्रोसीजर. ओके, सो आई होप यू ऑल आर well understand this topic. So similarly in MS logo you can write a set of commands to create any shapes or drawing. You can save it as a procedure for further use by giving it a name. In this way you do not have to write all the commands or instructions every time. Okay, you wish
that you wish to create a particular drawing, you simply type the procedure name and all the commands. Save it are automatically executed. Okay. So students, प्रोसीजर, व्हाट इज़ अ प्रोसीजर? आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि स्टेप्स बाय स्टेप किसी प्रोग्राम को करने में हमें जो भी स्टेप्स फॉलो करने होते हैं उसको प्रोसीजर कहते हैं. एंड प्रोसीजर इज़ अनदर नेम गिवन टू प्रोग्राम. ओके. नाउ व्हाट इज़ लोगो प्रोसीजर? Okay, so a logo procedure is a set of instructions given in a proper order to create a drawing or to carry out a calculation, collectively saved under a name. Okay, a logo procedure is a set of instruction given in a proper order. एक proper order में जो instructions होते हैं and to create a drawing or to carry out a calculation collectively सेव्ड अंडर अ नेम. एक नेम के अंदर सभी को प्रॉपर हम सेव करके. सो बाय यूजिंग लोगो प्रोसीजर you can save a set of commands in logo to perform a particular task instead of typing all the instructions again and again. Okay, got it? So for the example, command to make a rectangle is repeat to FD50, RT90 and FD50 and RT90. So you can save this command under the procedure name rectangle. Okay. So for this, every time when you wish to draw a rectangle in logo, you would simply type procedure name rectangle. ओके. आप रेक्टेंगल करेंगे तो आपको बार बार उसको टाइप करने की ज़रूरत बच्चों नहीं रहेगी. ओके. सो पार्ट्स ऑफ अ लोगो प्रोसीजर. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ लोगो प्रोसीजर? सो देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ अ लोगो प्रोसीजर. फर्स्ट टाइटल, सेकेंड बॉडी एंड थर्ड इज इंड. ओके. देयर आर 3 main parts of logo procedure. This is the most important thing बच्चों. So listen very carefully. Title, body and end. Okay. Now what is title? What is title? Title is the name that you assign to a procedure. You can start writing procedure with 2 commands. Okay. Followed by the procedure name. टाइटल में हम प्रोसीजर नेम देते हैं किसके थ्रू? 2 कमांड के थ्रू. देखिए सिंटेक्स. 2 प्रोसीजर नेम. एग्जाम्पल 2 रेक्टेंगल. प्रोसीजर नेम में हमें जो भी ड्रॉ करना है तो उसका हम नाम देते हैं, तो रेक्टेंगल. ओके स्टूडेंट्स. सो आफ्टर टाइटल व्हाट इज बॉडी? बॉडी. आफ्टर टाइटल you can type body from the next line. आफ्टर टाइटल यू कैन टाइप बॉडी फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन. जब हम फर्स्ट लाइन पे टाइटल लिखते हैं देन आफ्टर दैट वी कैन टाइप द बॉडी कमांड. सो दिस इज द मेन एरिया वेयर यू कैन टाइप ऑल द इंस्ट्रक्शन टू ड्रॉ अ फिगर और टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. ओके. बॉडी is the main area where you can type all the instructions to draw a figure or to solve a problem. Okay. In the above example, the body for the title to rectangle is repeat to. आगे इसका हम command दे देते हैं. Okay students. So end command. After you have typed all the instructions to draw a figure or solve a problem, फिनिश द प्रोसीजर बाय गिविंग इंट कमांड. इंट अकॉर्डिंग टू नेम, जैसा कि नेम है, जब हमारे सारे हम कमांड्स दे लेते हैं तो एट द लास्ट ऑफ द इंट वी कैन टाइप इंट कमांड. इंट कमांड मीन्स आफ्टर यू हैव टाइप ऑल द इंस्ट्रक्शंस टू ड्रॉ अ फिगर और सॉल्व अ प्रॉब्लम, सो फिनिश द प्रोसीजर बाय गिविंग इंट कमांड. So student, this is your
this is the some topics which I revise you. Okay, so listen very carefully and prepare your chapter 6 and 7 for the post periodic exam.